Hi people, so in this video I'll be taking why do we take dy by dx on the first derivative being equal to 0 at maxima or minima. Here we go. प्रॉब्लम ये है, सिंस ये आईआईटी का क्वेश्चन है, बहुत बुरी तरह उन लोगों ने सवाल को ट्विस्ट किया है। ट्विस्ट क्या किया पीपल? क्वेश्चन में आपको लगता है